So let's begin with the introduction of pragmatics. But before we go ahead, we need to have comparison of pragmatics with semantics because it will help you out in understanding that why you people are studying pragmatics after studying semantics, although both are dealing with the same thing, that is meaning. So let's begin. Semantics deals with the study of meanings of words and phrases, clauses and sentences. Pragmatics deals with study of meanings of words with concern to their context. So semantics deal with literal and dictionary-based meanings, whereas pragmatics deals with contextual and interpretive meaning. Where semantic deals with internal study of language, here pragmatics deals with external study of language. Where semantics deal with the study of sign and symbols, and pragmatics deal with the study of contextual and interpretation. Semantics deal with the literal meaning, and pragmatics deal with the speaker's meaning. So let's begin with introduction to pragmatics. Here's the content for this unit 6. Quickly, we'll take a review. We'll talk about pragmatics, significance of context in the study of meaning, reference which is dealing with the referring expressions and reference, inferences and shared assumptions, presuppositions and entailments, speech acts, politeness, and cooperative principles. And these are all technical terms, but when we will go deeper into the detail, you will get the idea that it's really simple and interesting to know. Personally, I am very much interested into this field of pragmatics because it is really dealing with the practical meaning, practical usage of meaning. So objectives are clearly mentioned here. If people are supposed to differentiate between conceptual meaning and speaker meaning, and then analyze the significance of context in the study of meaning, illustrate the difference between anaphora and cataphora references. ये anaphora और cataphora references ये इनफैक्ट टर्म्स हैं इसमें के जो होता है स्टार्टर ऑफ सेंटेंस और उस सेंटेंस के टू दोनों साइड से आप मीनिंग को रेफर करते हैं उसका मीनिंग और सेंस को क्लियर करते हैं. Differentiate between direct and indirect speech acts, analyze maxims of conversational cooperation, and understand importance of politeness in communication. What is pragmatics? We already are done with some comparison between pragmatics and semantics, and here quickly we'll take review. Pragmatics is a subfield of linguistics which deals with the study of meaning in the context of an utterance, which is often termed as contextual meaning. यानी इसको हमेशा हम कहते हैं कि ये contextual meaning है. जब आप किसी भी बात का बैकग्राउंड देखते हैं कि किस रेफरेंस से बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये contextual meaning है. अब इसके सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान में एक जो है एपीएस का वाकया वो बहुत बड़ा वाकया था जिसके नतीजे में जो एपीएस के जो है बहुत सारे वाली 116 जो है छोटे बच्चे हैं वो शहीद कर दिए गए. ठीक है, अब उसके बाद बहुत सूरत हाल हुई और बहुत से मिली नगमे बने जिसमें एक मिली नगमा था बड़ा क्या बनता फिरता है. मैं आपसे वो शेयर करती हूँ वो आप देखिएगा. You will notice a reference. Here is a reference to words.
So I deliberately gave example of national song, and that is directly giving reference towards some historical incident, and of course that can be taken particularly into that incident. तो इस contextual meaning में जब आप कोई भी बात को लेते हैं तो आप कहते हैं कि ये बेसिकली उसका contextual meaning है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड और थोड़ा नेशनल लेवल पे बताया है। इसके अलावा हम डेली रूटीन में जितने भी कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो उसे आप क्या कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, दिस इज ऑल कॉल्ड some kind of contextual meaning of the sentence, right? अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। pragmatics जो है basically how जो है examines how speakers communicate more than what is actually stated by the words. This pragmatics is also the study of implied meaning। एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं, और एक मीनिंग होते हैं जो कि आपको सरफेस पे नजर आते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइड मीनिंग है हिडन मीनिंग आपका जो है विच इज नॉट एक्चुअली डिराइव्ड द वर्ड्स बट रिफ्लेक्टेड थ्रू द कम्युनिकेटिव इंटेंशन ऑफ द स्पीकर्स। मीनिंग ये है कि अपेरेंटली ये मीनिंग नहीं है, लेकिन ये कि किसी के इंटेंशन से पता चलता है कि ये बेसिकली इसका क्या मीनिंग है। सिमेंटिक्स में तो आपको लिटरल मीनिंग होता है ना, वो बहुत ऑब्वियस होता है, बहुत क्लियर होता है, वो साथ साथ नजर आता जाता है। अब हम 6.2 पे बात करते हैं, और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है इन द स्टडी ऑफ मीनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एन utterance. Without analyzing the contextual information of an utterance, its meaning may not be decoded fully. Context is of different kinds. One type of context is generally known as linguistic context or core text, which refers to the set of the other words used in the same phrase, sentence or utterance. Meaning ये है कि एक सेंटेंस है, उसका भी बैकग्राउंड होता है जिसे आप कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, लेकिन एक कोर टेक्स्ट भी होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वन टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट जनरली नोन एज लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा क्या है, कोर टेक्स्ट है। कि कोर टेक्स्ट लार्जली इन्फ्लुएंसेस what we mean by a particular word in a sentence. For example, if the word bank appears in a sentence with the words like transaction, savings, we quickly realize which bank is meant in the sentence. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो, या नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक मीनिंग, एक सेंस रिलेट करते हैं। कहा जाता है कि वर्ड्स जो होते हैं कंपनी, वर्ड्स आर नोन बाय द कंपनी दे की, यानी कि जिस तरह के वर्ड्स आपको सराउंड करते हैं, जिस तरह के आपकी कोलोकेशंस होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसी तरह का आपका जो बैकग्राउंड होता है और सेंस होती है। तो इन्हें आप क्या कहते हैं, ये कोर टेक्स्ट है, क्योंकि ये आप बहुत से वर्ड्स मिलके सपोर्ट कर रहे हैं आपके टेक्स्ट को, और एक कॉन्टेक्स्ट की सेंस को डेवलप करें, इसको रीड करें काइंडली। ये सारा डिटेल में है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब जब कहा जाता है लिटरेरी प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू देयर लार्जर, यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है जिसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाईलाइट इट। So literary products जो होती हैं, they are always subjected to their larger socio-cultural context, derive their meanings and sense. Have you ever wondered how do we make sense of tautology like Lahore is Lahore, which apparently seems to be meaningless and does not have any communicative value, but is a knowledge of the socio-cultural context which makes the statement meaningful and reveals its communicative significance. अच्छा, आमतौर पे लाहौर इज लाहौर का मतलब लाहौर लाहौर है, जैसे कहा जाता है, पंजाबी में ऐसे कहा जाता है ना। तो ये बेसिकली वो सेंटेंस है जो बहुत देर से कहा जाता है, इसका रेफरेंस है, देयरफॉर इट इज है, लेकिन इसकी अपनी कोनोटेशन, एक मीनिंग है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इसका ये मीनिंगलेस है, बल्कि इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। देयरफॉर इट इज एविडेंट दैट the contextual sensibility is a basic requirement to understand implicit and subtle meanings of utterances and communicative intentions of the speaker. सो इसका मतलब ये है कि जितनी भी अटरेंसेस है उनका आप एक बैकग्राउंड है, एक अपनी सेंस है, और उसका अपने एक मीनिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट द रेफरेंस, रेफरिंग एक्सप्रेशन एंड द रेफरेंस, एंड दीज थ्री टर्म्स दे आर important from paper point of view as well. So for more elaboration, here is a representation of the idea reference versus referent. As a reference is the word we use to identify things are in some direct relationship to those things. यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप जब होता है तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, रेफरेंस कहते हैं। और रेफरेंट क्या होता है, इज व्हाट अ वर्ड अ सिंबल स्टैंड्स फॉर, कि वो वर्ड और सिंबल जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, कर रहा है। इट इज द कॉन्क्रीट थिंग
The person or the thing that a word or expression refers to. इन जिसका रेफर किया जाता है वो कोई कॉन्क्रीट फॉर्म होता है। जरा कि आप हवा को तो नहीं कह सकते ना कि हवा की तरफ रेफरेंसिंग नहीं। आप किसी पर्टिकुलर कोई कॉन्क्रीट चीज हो सकती है, कोई चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, इसको आप रेफर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू मे से दैट रेफरेंस और रेफरेंट में फर्क क्या है बेसिकली। So after discussion on the reference and the referent, you may be in the better position to understand reference is defined as the act of using language to refer to the entities। यानी कोई भी एक कॉन्क्रीट फॉर्म है इसको रेफर करने के लिए, उसकी तरफ डायरेक्शन बताने के लिए कि ये चीज है, दिस इज अ टेबल इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसे रेफरेंस कहते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ रेफरेंस वी कैन मेक यूज ऑफ प्रॉपर नाउन्स एज इन द केस ऑफ with Robert Ross in the previous example. Similarly, you may remember a class fellow who was often referred to as a Newton by the teachers because of his intelligence. क्लास में अक्सर कहते हैं ना जी भाई ये तो बड़ा थीटा है, ये तो न्यूटन है, भाई ये फिलोसफर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्हें आप क्या कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है जिनको आप किसी तरह रेफरेंस देते हैं। So here reference can be classified into two basic types. When a referring expression mentions a referent for the first time in the sense that there is no previous reference in the text, it is called exophoric reference। अब ये यहाँ पर कुछ descriptions है, तो उसमें क्या है exophoric क्या है, जब स्पेशली क्या हो रहा है कि referring expression जो है ना mention for the first time that has been mentioned और previously कोई reference नहीं, तो इसे exophoric कहा जाता है। ठीक है, तो exophoric reference जो होता है is, let's see, is dependent on the context outside of the text, either immediate situational context, which may be termed as setting, or the real social world। On the other hand, when a referring expression refers to an entity, यानी कोई भी concrete चीज है already mentioned within the text, it would be an example of an endophoric reference। अगर पहले से mention हुई भी है और आप उसको refer करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या है, endophoric reference है। For instance, in a sentence like Shakespeare is considered to be one of the greatest dramatists of his times, he has undoubtedly produced a number of tragedies of unmatched quality, the pronoun he, this he is an example of endophoric reference because it refers back to the Shakespeare who has already been mentioned in the sentence। And you know this endophoric reference is further classified into two types, anaphora and cataphora। ये भी बहुत पॉपुलर टर्म्स है, एंडोफोरा, एनाफोरा और कैटाफोरा की। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है बिकॉज दे प्रॉबेबली भी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और अपेरेंटली जो देखे ना लगता है कि मुश्किल है, लेकिन जब आप इनको टर्म्स को याद करना शुरू करेंगे और रिवाइज करते हैं तो देखिए समझ आ जाती है। अब सिंपल से देखिए, हमने यहाँ 4 डिफरेंट टर्म्स को पढ़ा है और उनको समझना और पढ़ना जो है किस कदर ईजी है। इट्स आई थिंक यू बेटर असेस्ड इट। अब देखिए हमने पहले एक्सोफोरिक पढ़ा, ठीक है, जबकि फर्स्ट टाइम रेफरेंस आता है, जब पहले से मौजूद हो तो फिर एंडोफोरिक कहते हैं। एंडोफोरिक के भी दो रेफरेंस आ रहे हैं, दो क्लासिफिकेशन है, एनेफोरा और कैटेफोरा। ठीक है, अभी एनेफोरा और जो कैटेफोरा बेसिकली आप देखिए कि ये दो टर्म्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ही लिंक्स बैक टू समथिंग दैट इज मेंशन्ड in the preceding text is called anaphora, while cataphora is the opposite of the anaphora as the referring expression often links to forward to a referent in a text that follows। मीनिंग ये है कि अगर आप बैक लिंक के साथ लिंक कर रहे हैं वर्ड को तो वो एनाफोरा होगा, और अगर फॉरवर्ड होगा तो वो कैटाफोरा, यानी कि बाद में आएगा तो वो कैटाफोरा आ रहा है। ठीक है, दिस इज एविडेंट इन द गिवन एग्जांपल, शी वाज अबाउट टू पुट हर फुट ऑन इट in the darkness, it was large cobra ready to sting in the dark। The pronoun it refers to cobra, and this is an instance of cataphora reference as it appears in the text before the referent cobra। यानी कोबरा से पहले ही ये यूज किया गया है। ठीक है, reference and its different kinds are presented in the following pictorial forms for the sake of clarity। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन है, अब देखते